Hello bachcho, let's read out the question. Draw a labeled ray diagram of refracting telescope. Define its magnifying power and write the expression for it. And then write two important limitation of refracting telescope over the reflecting type of telescope. So let's see the solution here. But before that, let's see the key concept. So generally key concept, we are going to talk about the refracting telescope. Okay, refracting telescope. तो सबसे पहले तो हम इसकी रे डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं. So generally it has the two main parts. एक हो जाता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है. So let's suppose this is nothing but the objective here. और दूसरा हो जाता है आईपीस. So let's suppose कि यहाँ पर मैंने आईपीस ड्रॉ कर दिया, ठीक है. ये हो गया हमारा आईपीस. नाउ हम प्रिंसिपल एक्सिस कंसिडर करेंगे. तो लेट्स सपोज कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है. और यहाँ पर मैं एक वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ उसमें आईपीस और उसमें, ठीक है. नाउ जो पैरेलल रेस होंगी वो पास होंगी थ्रू आउट दिस टू ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस. सो किस तरीके से पास होंगी, तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये फर्स्ट रे है और इसके पैरेलल में मैं एक सेकंड रे ड्रॉ कर देता हूँ लाइक दिस, ठीक है ना. यहाँ से वो रिफ्रैक्ट होकर एक पॉइंट पर क्या होंगी, सम होंगी, जहां पर हमारी इमेज बन रही है, एंड विच इज नथिंग बट इन्वर्टेड इमेज, राइट. सो लेट्स सपोज के दिस ये इस पॉइंट पर हमारी इन्वर्टेड इमेज बन रही है. सो ऑब्वियसली ये रेस कहाँ गैदर होंगी, इस पॉइंट पर गैदर हो जाएंगी. देन आफ्टर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट it will go throughout the eyepiece like this, and after eyepiece they will be go parallel to each other. ये रो इस तरीके से पैरेलली यहां से बाहर निकल जाएगी, ठीक है. एंड सिंपली you can see that the virtual image from this point which will actually form at infinity, ठीक है. And simply we can see the image right over here. So generally if you see that, so ये ऑब्जेक्टिव हो गया और ये इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है. इसको हम नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश. इसकी हाइट को हम मान लेते हैं h के इक्वल. और ये जो एंगल दिख रहा है आपको, द एंगल सबटेंडेड बाय द आईपीस, ओके, एंगल सबटेंडेड बाय द रे with the principal axis after passing the eyepiece, वो क्या होता है बीटा. and angle subtended by the ray when it is incident to the objective lens, वो क्या होता है अल्फा के इक्वल होता है. सो ये एंगल अल्फा, ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा, ये एंगल बीटा हो जाएगा. now if you talk about the focal length, so focal length of objective वो कहाँ से कहाँ तक रहेंगी, it will be up to the position of image forming. so यहाँ तक इमेज फॉर्म हो रही है. so ये एफ नॉट हो गया और एफ ऑफ ई इमेज से तो आई पीस तक का जो डिस्टेंस होगा वो एफ ऑफ ई हो जाएगा, दैट इज फोकल लेंथ ऑफ आई पीस. सो ये हो गया रे डायग्राम फॉर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप. नाउ we have to find the means we have to define the magnifying power and we have to write down the expression for it. तो सबसे पहले हम डिफाइन कर देते हैं. सो magnifying power of refracting telescope, वो क्या होता है, the magnifying
power is defined as the ratio of the angle beta subtended at I, which we can see here into the diagram. This is nothing but what beta, right? By the final image, ये कुछ फाइनल इमेज है हमारी, राइट? यहाँ पर जो हमें मिल रही है, टू द एंगल अल्फा which the object subtends at lens. ठीक है? सो यदि हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें, सो हम मैथमेटिकली इसको क्या लिख सकते हैं? दैट इज m is equals to बीटा बाय अल्फा. ना बीटा क्या होगा? h बाय f ऑफ e, और अल्फा क्या होगा? h बाय एफ नॉट. सो हम एफ नॉट को ऊपर ले जा सकते हैं एंड डिवाइडेड में हमारे पास क्या आ जाएगा? h. से यहाँ से देखिए एच एच कैंसिल हो गया और सिंपली हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर क्या आ गया फॉर द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप? दैट इज एफ नॉट बाय एफ ऑफ ई. सो ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर मैग्निफिकेशन पावर ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप. ना यहाँ पे सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं वी हैव टू राइट द इम्पोर्टेंट लिमिटेशंस ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप or the reflecting type of telescope. So let's see the limitation of refracting telescope. So इसमें फर्स्ट में आ जाता है refracting telescope suffering from chromatic aberrations as it uses large sized lenses. So what is mean by this limitation? So generally refracting telescope में chromatic aberrations होता है, यानी कि आप distortion भी बोल सकते हैं, that is distortion of light. And ये किसके कारण से होता है? Because it uses the large sized of lenses. Now what is mean by distortion? So generally जो different colors की light होती है वो एक ही पॉइंट पर गैदर ना होते हुए वो डिफरेंट पॉइंट पर क्या होती है? गैदर होती है. मीन्स उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है. सो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिक एब्रेशन. सो जनरली इस टाइप का लिमिटेशन हमें किस में देखने में आता है? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में देखने को आ जाता है. नाउ लेट्स सी द सेकंड लिमिटेशन. द requirement of big lenses tend to very heavy and therefore difficult to make and support
by their ages. So जनरली जो भी यहाँ पर लिमिटेशंस दी हुई है वो रिगार्डिंग दिस लार्ज साइज ऑफ लेंसेज की वजह से, बिकॉज हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं, बिग साइज ऑफ लेंसेज यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका वेट हेवी हो जाता है एंड देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू मेक, और इसको जो सपोर्ट है जो हम प्रोवाइड करते हैं एजेस से वो भी क्या हो जाता है, डिफिकल्ट होता है. सो देयर आर द टू important limitation regarding refracting telescope over the reflecting telescope. So this is what all about this question. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.